नहीं अभी बैठे जी में उन्होंने काम किया है। तो उनके साथ प्रोफेसर ज़हीर अख्तर होंगे और आप उनको जानते हैं, गुलाब देवी जो हॉस्पिटल है उनसे उनका ताल्लुक़ है और वो हमारी एसोसिएशन के साथ अक्सर लेक्चर करते रहते हैं और किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। तो हस्बे मामूल हम कुरान की रेसिटेशन से, हौली कुरान से अपना जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान मुशर्रफ साहब से कि अगर वो ऑनलाइन हैं तो वो अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है उसका आगाज़ करें और उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे अपने पैनलिस्ट से और ऑनलाइन जो क्वेरीज हैं उसको भी आंसर करेंगे और जो हमारे यहाँ हाजरीन हैं उनके सवालात भी लेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस्मान मुशर्रफ साहब से कि वो अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? यस, कैन यू हियर मी? Yes, Dr. Saab. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. First of all, I am grateful to Gets Pharma for arranging the series of these academic activities, and it's an honor to talk on this prestigious platform of Pakistan Society of Internal Medicine.
and Pakistan Society of Family Physicians, because you people are the backbone of our health system. So today we are going to talk on the treating type 1 diabetes with insulin and oral. So first of all, certain facts about type 1 diabetes. Unfortunately, we don't have data from Pakistan. This is the data from United States. In United States, about 1 in 500 people in United States, they're having a type 1 diabetes. Around 80 people, they are diagnosed with type 1 diabetes every day in US. And the 5% of people who are having who have a parent or a sibling with type 1 diabetes, they ultimately they develop type 1 diabetes, suggesting that there is some disease. And the important fact about type 1 diabetes is that insulin therapy is the only effective treatment for type 1 diabetes. So this is the pathophysiology before starting the management, before discussing the management of type 1 diabetes. Because if you understand the pathophysiology of type 1 diabetes, then obviously it would be quite easy to understand the management and treatment of type 1 diabetes. Here you can well see the blue cells. These are the islets of Langerhans. These are the beta cells in islets of Langerhans. These are the healthy cells in normal individuals. But these are, you can very well see that these blue cells are replaced by fibrous tissue. So we're having very few healthy beta cells in patients with type 1 diabetes. So here we can see how does the insulin works. We see that on cellular surface, we are having insulin receptors and glucose channels. Insulin is circulating in the blood. When insulin binds with this insulin receptor, it causing opening of these glucose channels. So ultimately, glucose moves from blood into the cells for metabolism. So insulin is the key that unlocks the glucose channels. So obviously, when there will be no insulin or very less insulin, so there will be the locking of these glucose channels. So glucose will stay into the circulation and very little amount of glucose will move into the cells for metabolism. Here you can see what happens in patients with type 1 diabetes. The glucose that remains in the circulation, and very little amount of glucose moves into the cells. But what happens in patients with type 2 diabetes, you can see that these blue circles, the insulin is there, glucose is there in circulation, but it can't move into the cells because there is some resistance at cellular level. So in patients with type 2 diabetes, insulin is there, but there is some resistance. But in type 1 diabetes, we don't have any, we have little amount of insulin to move glucose, to effectively dispose glucose into the cells. So here you see that healthy individuals, pancreas produces enough insulin to dispose of the glucose into the cells, but it doesn't happen in patients with type 1 diabetes because we don't have enough insulin to dispose of the glucose into the cells. So this is the natural history of type 1 diabetes. We see that genetic susceptibility is there in patients with type 1 diabetes. There is a gradual reduction in beta cell mass or insulin production in the natural course of type 1 diabetes. But genetic susceptibility is there when there are environmental triggers and modulators, and when there are certain autoaggressive cells, the antibodies, they are present in circulation, they attack the beta cells, they destroy the beta cell, they infiltrate the beta cells. And obviously, when 90% of the beta cells are destroyed in patients with type 1 diabetes, they start developing symptoms that we see in patients with type 1 diabetes. But 50% of the beta cells, they are gone in patients with type 1 diabetes, type 2 diabetes at the onset of type 2 diabetes. So you can well see that in type 1 insulin is an insulin deficient state. So here are different markers that leads to beta cell destruction. Because of shortage of time, we will not be discussing over here these inflammatory markers. So here there are certain environmental factors that lead to
that that environmental determinants in type 1 diabetes, that certain environmental factors are harmful for type 1 diabetics, while other are the protective environmental factors in type 1 diabetes. The hormone factors are like high birth weight, obesity, enteroviral infection, COVID-19 infection, the rotaviral infection, the antibiotics, and gluten allergy. But there are certain factors that seems to be protective in patients with type 1 diabetes, like breast milk, like vitamin D supplementation, like omega-3 fatty acids, prebiotic, and microbiomes in guts of these individuals with type 1 diabetes. So here we discuss the etiology, the genetic predisposition, the autoimmunity, and environmental factors. They contribute to the development of type 1 diabetes. Autoimmunity. Why autoimmunity is important? Because the people with type 1 diabetes, they are having other autoimmune diseases as well, like celiac disease, thyroid diseases, Addison's disease, and pernicious anemia as well. So again, the genetic predisposition is there, but beta cell mass remains more or less the constant in patients with type 1 diabetes. But when there are environmental triggers and immunomodulators, and when there is attack by the antibodies, the autoaggressive cells that are present in circulation in patients with type 1 diabetes, there is gradual decline in beta cell mass. So progressively, beta cell mass decline over the period of time, and at the onset of type 1 diabetes, we have very little beta cell mass. Here again, you can see that at the onset of type 1 diabetes, almost we have around 10% of beta cell mass that is there. We have lost, for the people with type 1 diabetes, they had already lost 90% of their beta cell mass at the time of discovery, at the time of diagnosis of type 1 diabetes. So what are the signs and symptoms of type 1 diabetes, and what are the presenting complaints in patients with type 1 diabetes? Obviously, we come across the patient with type 1 diabetes with weight loss. Significant weight loss is there in kids, especially in kids at the time of onset of type 1 diabetes. But significant weight loss is associated with polyphagia. There is increased appetite. On one hand, there is increased appetite in patients with type 1 diabetes. On the other hand, there is significant weight loss. The second thing we usually come across in patients with type 1 diabetes is the osmotic symptoms in the form of frequent urination and in the form of intense thirst. When glucose doesn't move into the cells, we patients with type 1 diabetes, they complain about fatigue, lethargy, irritability, blurring of vision, but sometimes they present with diabetic ketoacidosis. In most of the individuals, especially in kids, it's very clear from history that these kids they're having type 1 diabetes. But in adolescents or in adults, there are certain gray areas where we are not sure what type of diabetes this patient is having. So in these individuals, we test certain islet autoantibodies to diagnose type 1 diabetes, because the sensitivity and specificity of these antibodies that is quite high. In Pakistan, we're having GAD65 antibodies. There are 3 or 4 labs in Pakistan that is doing this GAD65 antibodies, and all antibody profile is also doing. One lab in Pakistan is also doing all these antibody profile, but it's a bit costly. But GAD65 antibody single test, very effective. I in my clinical practice, I usually I test GAD65 antibodies when I come across the gray zone, when I am not sure about what kind of diabetes my patient is having. Either it is type 1 diabetes, either it is monogenic or type 2 diabetes. So here you can see the sensitivity or specificity of these antibodies at the time of onset of type 1 diabetes. You can very well appreciate the sensitivity of these 4 antibodies. That is around 60 to 80% of the individuals, they're having positive antibodies. But you can very well appreciate the high specificity, around 97 to 99% specificity of these antibodies. Means if these antibodies are present in those people whom you suspect that these people are having type 1 diabetes, the chances of type 1 diabetes are all
100%, almost 100%. But the sensitivity is bit low in these antibodies. But in Asians, the sensitivity of these antibodies is very high. Especially in Asians, the sensitivity of these antibodies is around 90% or more than 90% for detection of type 1 diabetes at the onset of type 1 diabetes. So this is the flow chart for investigation of suspected type 1 diabetes in newly diagnosed adults. When you come across adults with suspected type 1 diabetes, you test islet autoantibodies. If islet autoantibodies they are positive, it is clear cut that this patient is having type 1 diabetes. You start treatment on the basis on the lines of type 1 diabetes. But 5 to 10% of the cases with adult onset type 1 diabetes, they are having negative autoantibodies. So this is a gray zone. When they're having negative autoantibodies, to see the age, if the age is less than 35, you have to see the are there any features of monogenic diabetes or type 2 diabetes. The monogenic diabetes, it's obviously autosomal dominant. We usually see the successive generations are having having diabetes in earlier age group, and they don't have sign of insulin resistance. If the features of monogenic diabetes are there, you test serum C-peptide level. If C-peptide level is more than 200 picomole per liter, then obviously it's monogenic diabetes like MODY. But if we don't come across the features of monogenic diabetes, then obviously we have to look for the features of insulin resistance. If the features of insulin resistance are there, then we have to treat these individuals on the lines of type 2 diabetes. And otherwise, we will treat these individuals on the lines of type 1 diabetes. So this is the management of type 1 diabetes. So these few lines are very important, and this is the summary of what we will be discussing in our coming slides. Most individuals with type 1 diabetes, they should be treated with multiple daily injections of prandial and basal insulin or continuous subcutaneous insulin infusion in the form of insulin pump. Second point is, most individuals with type 1 diabetes, they should use rapid acting insulin analogs to reduce the risk of hypoglycemia. Individuals with type 1 diabetes, they should receive education on how to match mealtime insulin doses to carbohydrate intake, fat and protein content, and they should tailor their insulin according to the physical activity and diet plan as well, and they should learn the sick day rules. So these are the general principles for management of type 1 diabetes in adults. This is a busy slide. We will be discussing only 2 or 3 points over in this slide. All the people with type 1 diabetes, they should get self-management education and support, including principles of nutrition, the carbohydrate counting, the exercise, and they should learn sick day rules. So this is how we initiate insulin in patients with type 1 diabetes. It is recommended to start conventionally. The dose of insulin, the total daily dose of insulin should be 0.5 unit per kg per day, but the range is 0.4 to 1 unit per kg per day. So this is the total daily dose of insulin when we start insulin therapy at the time of onset of type 1 diabetes. The 50% of the total daily dose that should be given in the form of basal insulin. What are the basal insulin? Basal insulin are intermediate acting insulin like NPH, or they can be the long acting insulin like insulin glargine, insulin degludec, insulin levemir. The remaining 50% of the total daily dose that should be given in the form as total prandial insulin that should be divided in breakfast, lunch, and dinner. So what are the prandial or basal insulin? These are the short-acting insulin or ultra-short-acting insulin. The short-acting insulin are the regular insulin, while the analogs, the ultra-short-acting insulin are your aspart, like glulicine, like aspart and glulicine, etc. So what should be our choice when we start treatment in type 1 diabetes?
with multiple daily injections of insulin. Obviously, when we choose insulin, basal insulin, our first choice is we go with insulin analogs, the long-acting insulin. Obviously, when we're having certain financial issues with these long-acting insulin, then obviously we can rely on intermediate-acting insulin, that is NPH. In multiple daily injections, when we choose the prandial insulin, obviously our first choice is either Lispro, Aspart, or glulisine or subcutaneous insulin infusion. But if obviously when there are financial constraints in some patients with type 1 diabetes, we have to rely on regular insulin in these individuals as well. Then in prandial insulin, in continuous subcutaneous insulin infusion, which are used in the form of insulin pumps, we use ultra short acting insulin like Lispro, like Aspart. So this is again the starting dose of insulin. We divide in 50% into basal insulin, while 50% at the time of diagnosis of type 1 diabetes should be given at bolus insulin. And we have to match the prandial insulin with carbohydrate counting and the insulin sensitivity factor that I think you might have discussed earlier, or you may discuss the carbohydrate counting in future, because carbohydrate counting is the mainstay in treatment of type 1 diabetes, because without carbohydrate counting, your patient cannot have flexible lifestyle, and it is very difficult to control blood glucose levels without carbohydrate counting in people with type 1 diabetes. Now, one question for all of you: can we use pre-mixed insulin in type 1 diabetes? What is your answer? What can be your answer? If you ask me this question, can we use pre-mixed insulin in type 1 diabetes? My answer will straight away will be no, absolutely not, because using pre-mixed insulin in type 1 diabetes is crime. But we usually come across many people with type 1 diabetes whom people used to give 70-30 insulin, or Mixtard 30, Humulin 70-30, Novomix 30 insulin. So using of premix insulin in type 1 diabetes is simply a crime in endocrine world. So this is the algo when we come across a new onset diabetes in youth who are having obesity or who are overweight, when there is clinical suspicion that patient might have type 1 diabetes, type 2 diabetes, there is a gray zone. In this situation, you check HbA1c. If HbA1c is less than 8.5%, patient doesn't have any ketoacidosis, you start with lifestyle modification along with metformin titration. If HbA1c is more than 8.5% and there is no acidosis or ketosis, then you combine metformin with lifestyle modification and basal insulin. And when patient is having diabetic ketoacidosis, you start with insulin infusion and other infusions. You treat this individual on the line of diabetic ketoacidosis. Meanwhile, you get the pancreatic and autoantibodies. If autoantibodies are positive, when you come across a diabetic individual, a youth, in younger individuals with gray zone, if autoantibodies are positive, it is straight away, it is type 1 diabetes. You treat this patient on the line of type 1 diabetes with multiple daily injections of insulin. That are the best insulin choices in patients with type 1 diabetes. But when these autoantibodies are negative, obviously you move on treating these individuals on the line of type 2 diabetes. So the non-insulin treatment for type 1 diabetes. What are non-insulin treatment for type 1 diabetes, or what are the oral treatment options for type 1 diabetes? At the moment in 2022, we have one non-insulin preparation that is injectable, and that is pramlintide, the amylin mimetic. That is unfortunately not available in Pakistan. And this is the only thing after insulin that got approval by FDA for use in patient with type 1 diabetes. But the reduction of HbA1c with this amylin mimetic is around 0.3 to 0.4%, very little reduction in HbA1c.
but there is some reduction of weight of around 1 kg with amylin mimetic, but it is associated with GI upset. So not a very good choice in people for type 1 diabetes. But all other three options like metformin, GLP-1 receptor agonist, and SGLT2 inhibitor, they are not been approved by FDA for treatment in type 1 diabetic individuals, and they are under clinical trials. We don't see any metformin and any reduction in HbA1c with metformin use, but it is associated with reduction of around 1 kg weight, but it is associated with GI side effects in patients with type 1 diabetes. While GLP-1 and SGLT2 inhibitors, they cause around 0.32 to 0.4% reduction in HbA1c. GLP-1 receptor agonists like liraglutide at high dose causes 5 kg weight reduction in type 1 diabetes, but it is associated with GI upset, while SGLT2 inhibitor cause around 1.72 kg weight reduction, but it is not free of side effect. There are high chances of decay in patients who are using SGLT2 inhibitors in type 1 diabetes. SGLT2 inhibitor, the dapagliflozin at the dose of 5 milligram per day was approved by European Agency for Study of Diabetes a couple of years back, but they have withdrawn their approval few months back, obviously because of so many side effects. So at the moment, we don't get FDA approval for all these three non-insulin preparation for use in type 1 diabetes. So obviously we are having two choices. Either we move on with insulin, or second choice, but not very effective one, is the amylin mimetic, available with name of pramlintide, but again, it is not available in Pakistan as well. So these are the different insulin regime, the multiple daily dose of insulin. We give fast acting 3 insulin at breakfast, lunch, and dinner, and we give intermediate acting insulin once daily or twice daily. Or we do have other options like we give rapid acting insulin thrice a day, and we give prolonged acting insulin, the long acting insulin, the insulin analogs like glargine, like degludec, like levemir once daily. Either we can give long acting insulin at the time of dinner, or we can give this long acting insulin in breakfast time, while we have to give rapid acting insulin at least thrice a day for treatment in type 1 diabetes. So this is the profile, the insulin infusion. This is the blood glucose profile with continuous subcutaneous insulin infusion. This mimic the natural insulin excretion in healthy individual. We are having a flatter profile at a basal level. You can see the basal level, a flatter profile of blood glucose, but at the time of meal, there is rapid increase in insulin. The endogenous production of insulin is increased from beta cells in healthy individuals like this. It counters the rapid rise in glucose. So glucose level, they return rapidly within normal limit. So this happens again when you use the meal, when you use a major meal. So this continuous subcutaneous insulin infusion mimic the natural insulin excretion from pancreas as we see in healthy individuals. So this is the insulin effect in patients who are given long-acting insulin like glargine. Glargine is having flatter profile, and we use three times the prandial insulin, aspart or blue lysine or lispro. So more or less, this combination mimics the natural body insulin excretion, but you can see this is not the case with levemir and NPH. NPH and levemir, they don't have flatter insulin profile at basal level, and obviously at a basal as a bolus, we don't have very good insulin control with these preparations. So in non-affording individual, when we are having financial constraints in patients with type 1 diabetes, obviously we have to rely on regular insulin, 3 regular insulin in a day, or 2 NPH or 1 NPH in a day. But the blood glucose profile, the insulin profile is not very smooth with this preparation. But in non-affording class, in clinical practice, we usually do
we usually see very good effects of these preparations with insulin NPH twice a day or regular insulin thrice a day. So in non-affording class, you can safely use this combination. It's very effective clinically, and I have personally tried this insulin regime in my type 1 diabetic individuals with excellent results as well. So this is the insulin carbohydrate ratio, the calculation of insulin, the prandial insulin in patients with type 1 diabetes. Obviously, this is a huge topic. You have to learn the insulin to carbohydrate ratio and insulin sensitivity factor to administer the prandial insulin twice or thrice daily in patients with type 1 diabetes. So these are the characteristics of various insulin analog preparations. We see the short-acting insulin. The onset is around 30 to 60 minutes. It peaks 1.2 to 1.5 to 3 hours, and the duration of action is 4 to 6 hours. While in rapid-acting insulin, they're having a rapid onset of action. The peak is 30 to 90 minutes, or in aspart, it is 1 to 3 hours. While duration of action is 3 to 5 hours in case of rapid acting insulin. While in case of intermediate acting insulin, the onset of action is bit prolonged. Peak is around 6 to 12 hours, and duration of action is around 10 to 18 hours with intermediate acting insulin. While in case of long acting insulin, the onset of action is around 2 to 4 hours. Insulin glargine and insulin degludec, both these insulin, they are having no peak. So excellent profile in patient with type 1 diabetes, and they're having longer duration of action. So we can safely give these insulin analogs once daily in patients with type 1 diabetes. So these are the relative attributes of insulin delivery approaches in patients with type 1 diabetes. If we do use multiple daily injections of insulin, the long-acting insulin, the rapid-acting or ultra-rapid-acting insulin, we are having flexibility with dosing of insulin. We're having a low risk of hypoglycemia, but the cost is our major issue. Cost is a bit high. But if we use multiple daily injection with NPH and short-acting insulin, the regular insulin, obviously we lose our flexibility. There is higher chances of hypoglycemia, obviously, but the cost is relatively low with this conventional insulin preparation. But with continuous insulin infusion, with insulin pumps, the flexibility of insulin, that is quite high, very low risk of hypoglycemia, but the cost is the major issue. They are very much costly. The insulin infusion pumps, they are extremely costly, especially in Pakistan. So the artificial pancreas, what is artificial pancreas? This is the artificial pancreas. We are having CGM sensor, CGM receivers, control algo devices, and the insulin pumps. It works in a closed circuit to control blood glucose levels within normal limit. So here we're having continuous glucose monitor that is attached over skin, over abdomen, and we're having infusion pumps. That device, the insulin delivery device. So it works as artificial pancreas. We see the closed loop system, the artificial pancreas. So this is the future of type 1 diabetes. So there are few indications of beta cell replacement in people with type 1 diabetes. If people with type 1 diabetes, they're having severe diabetic chronic kidney disease, GFR is less than 30. We have to move with islet cell transplantation along with kidney transplantation or pancreatic transplantation with kidney transplantation. But if patient with type 1 diabetes having severe metabolic complications like hypoglycemia, unawareness, ketoacidosis, or failure of insulin-based management to prevent acute complication, if these people are having impaired kidney function, obviously we go with simultaneous kidney and pancreas transplantation. When these people with severe metabolic complication with type 1 diabetes, they're having stable kidney function test, we can have the option of either islet cell transplantation or pancreatic transplantation. So 2 or 3 slides on this landmark trial on type 1 diabetes, the DCCT trial, the extended study EDIC.
So this trial started in 1983, and this trial completed in 1993. After that trial, there was an extended study on the similar cohort of population that we studied in DCCT trial, the EDIC trial. This trial continued in 1994, and it continued till 2021. So what are the important points that we noted in DCCT trial? It clearly showed that risk of progression of complications can be reduced by reduction in HbA1c. If you're having very tight control of glucose, you can significantly reduce the microvascular complications associated with type 1 diabetes. But when you lose the HbA1c control, when you lose glycemic control, there is rapid deterioration of these functions of end organs, and we have rapid microvascular as well as macrovascular complications in type 1 diabetes. In DCCT trial, around 700 people were enrolled in primary prevention cohort, while in secondary prevention cohort, around 700 patients were also included in the same cohort. So 50% of individuals were given intensive treatment regime, while 50% of the individuals, they were given conventional insulin regime. After 6.5 years, there was significant reduction in microvascular complication by 34 to 76% in those individuals who were given intensive insulin regime. So they extended this study with the name of Epidemiology of Diabetes Interventions and Complication Studies, and this study ran for 28 years, and this study showed that the significant reduction in microvascular complication, macrovascular complications over 28 years in patients with type 1 diabetes when they were switched to more intensive control. The HbA1c, average HbA1c level in this study was around 8%. So there was significant reduction in microvascular complication and microvascular complication in this trial, in these two trials, in patients with type 1 diabetes, but there was no significant reduction in mortality in this clinical study. So this is the approach to individualize the glycemic targets in type 1 diabetes. Obviously, the HbA1c, the average HbA1c should be around 7% in a patient with type 1 diabetes, but obviously we can relax the HbA1c and we can tie the HbA1c targets depending on certain factors like duration of diabetes, the life expectancy, the presence of cardiovascular diseases, and the presence of different comorbidities. So these are the glycemic targets in adults with type 1 diabetes. The pre-meal levels should be between 80 to 130 milligram per deciliter, while the post-meal levels, they should be less than 180 milligram per deciliter according to ADA, and HbA1c should be less than 7% in these individuals with type 1 diabetes. But the glycemic targets in children and in adolescents, they are different. Like HbA1c target is around less than 7.5% in patients with type 1 diabetes in kids, while the pre-meal levels, they're around 90 to 130 milligram per deciliter. The post-meal levels between 90 to 80 milligram per deciliter, while the bedtime target, that should be between 90 to 150 milligram per deciliter. But obviously, we have to individualize the glycemic targets depending on the patient, because we have to keep in mind the certain factors to guide our the glycemic targets, especially the hypoglycemia. So this is the example of continuous glucose monitoring. We're having Libre Freestyle. We have a sensor that is applied over arm, and it remains over arm for 14 days. And this is the monitor where we can check the blood sugar level with a single prick for 14 days, and we can record the blood glucose levels in anyone after every 5 minutes.
So what is the importance of this device? This device, the Libre Freestyle, is currently available in Pakistan. So what is the concept of target and range? So we are moving towards the era where type 1 diabetes, we have to move from HbA1c towards the how much time a patient spent between the glycemic range, between time in range. The time in range for type 1 diabetes is 70 to 180 milligram per deciliter, and in type 1 diabetes, more than 70% of the time, the blood sugar of these patients should be within range, that is between 70 to 180 milligram per deciliter, and in less than 25% of the time, it should be above 180 milligram per deciliter, and in less than 5% of the time, it should be above 250 milligram per deciliter. And similarly, less than 4% of the time, it should be less than 70 milligram per deciliter, and less than 1% of the time, in patients with type 1 diabetes, the blood sugar should be below 54 milligram per deciliter. So this is the concept of time in range, because if you keep the blood sugar level within this range, we can prevent the microvascular complications, the macrovascular complications, the autonomic complications, and the all-cause mortality associated with type 1 diabetes. So this is my last slide. So this is the future technologies in type 1 diabetes. In future, we can have new targets to reduce these complications. We can have biosimilar insulin. We can have novel insulin formulations. We can have artificial pancreas. We can have induction of immune tolerance. We can have beta cell growth factors. And finally, we can have stem cells in future for treatment of type 1 diabetes. With this, I conclude my today's talk. Thank you for your active participation. Thank you very much, Dr. Usman, for your excellent presentation on management of type 1 diabetes. The house is now open for discussion, and you can direct your question either to Dr. Usman or our worthy panelist, Professor Saeed Zahir Akhtar Saab, and Dr. Amna Muazzam Sahiba. So house is open to discussion. Any question from the house? Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulil Kareem. पहले तो फैमिली फिजिशियन ये बताएं कि जो टाइप 1 डायबिटीज देखते कितनी हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में? स्टार साहब, आप 100 मरीज रोजाना देखते हैं, टाइप 1 के पेशेंट कितने आते हैं? कितने कम? 10% कम? नहीं, ऑन एन एवरेज कितना देखते हैं महीने में, हफ्ते में? हम अभी टाइप 1 की बात करते हैं, टाइप 2 की तो बात हमेशा से करते ही हैं। टाइप 1 के हमारी प्रैक्टिस में हैं कितने वैसे? 5 to 10 पेशेंट पर पर्सन। बाकी कोई और हाउस से? पहले उस्मान साहब से कोई क्वेश्चन है तो वो जरा बात कर लें। डॉक्टर साहब, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? ऑनलाइन क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो मुझे ला दीजिए। जी डॉक्टर साहब। और जो है रेगुलर को मॉर्निंग इवनिंग में मिक्स कर सकते हैं या वो इट हैज टू बी गिवन सेपरेटली? डॉक्टर उस्मान जरा उनसे क्वेश्चन लें जरा, ये हैं वो लाइन पे या नहीं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर उस्मान साहब आप ऑनलाइन हैं? जी जी, मुझे जितना का आइडिया हुआ है इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, आई थिंक क्वेश्चन इज can you mix regular and NPH insulin? Obviously we can mix a regular and NPH. Initially we fill the syringe with regular insulin, then we fill it with NPH. तो पहले आपने उन्हें कहना है कि रेगुलर फिल करें सिरिंज के अंदर, फिर आप NPH को फिल करेंगे और मॉर्निंग और इवनिंग पे इसको इकट्ठा यूज करेंगे, और जो लंच टाइम है आप उसे सिर्फ रेगुलर यूज करेंगे। तो रेगुलर सिर्फ एक दफा देंगे और बाकी सुबह और शाम को आप मिक्स करके देंगे।
And this is the practice for our non-affording class. I prefer this regime for non-affording class, and we see excellent clinical results with this simple preparation as well. डॉक्टर ज़हीर साहब, एक सवाल इन्होंने पूछा है हमारे जो ऑनलाइन है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसकी जो अक्रंस है पाकिस्तान के अर्बन एरियाज़ में, वो कोई स्टडी हुई है जो बताए कि कितनी है, और जो दूसरी डिजीज़ हैं कार्डियोवास्कुलर, वो इसके साथ कितनी एसोसिएटेड है, ऑटोइम्यून और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की एसोसिएशन कितनी है टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ? ऑनलाइन क्वेश्चन इसमें यही है कि जनरली जो हमें कहा जाता है कि 5 to 10% डायबिटीज दुनिया में वर्ल्ड वाइड मौजूद है, ऑलमोस्ट इसी का सेम डाटा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि हम भी जो अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं ना 5 to 10% के करीब टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एज यू नो कि जनरली हम ये समझते हैं या फैमिली फिजिशियन ये समझते हैं कि दो तरह की डायबिटीज हैं, टाइप 1 और टाइप 2। हालांकि देयर आर 7 टाइप ऑफ द डायबिटीज, 7 टाइप्स, उनमें से एक टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है। बाकी एसोसिएटेड अक्रंस एट दैट टाइम कि जब उसको डायबिटीज पता चले उस वक्त कार्डियोवास्कुलर डिजीज होना या कोई साथ एसोसिएटेड होना, उनमें से एक वैरायटी है वोल्फ्राम सिंड्रोम की, जिसको डिड मॉड भी बोलते हैं। वो साथ ऑप्टिक एट्रोफी और डेफनेस के साथ। अदरवाइज एसोसिएशन एट दैट टाइम वास्कुलर डिजीज की नहीं है। वो एज ए कॉन्सिक्वेंस जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन जाती हैं, अगर वेल कंट्रोल ना हो तो डायबिटिक्स टाइप 1 वालों के अंदर भी अर्ली कॉम्प्लिकेशन वो आ सकती हैं। डॉक्टर आमना, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक गेट्स एंड फैमिलीकॉन फॉर इनवाइटिंग अस ऑल। मुझे डॉक्टर ज़हीर को टू दिस प्रेस्टिजियस टॉक and congratulate Dr. Musharraf for an excellent talk. He's a very enthusiastic speaker and a doctor. Sir की point बिल्कुल ठीक है. It is relatively less common as compared to type 2. Type 1 की बात कर रही हूँ. लेकिन unfortunately we are few of those doctors that we see a type 2 diabetic patient on every next day of our OPD. मेरी हर दूसरे दिन ओपीडी के अंदर मैं एक टाइप 1 बच्चा देखती हूँ। The age ranges from 5 years of age to 28-30 years. ठीक है। So point ये नहीं है कि ये कितना common है। The important point is that it is rising. We need to know why. Number 2, how to treat it. Most of these patients come to tertiary care. I am a specialist. I'm a tertiary care person. When complications हो चुकी होती हैं। सर, आप सब लोग forefront पे हैं। You see more patients than us. आपके पास ये पेशेंट पहले आता है, आप इसको बेहतर से बेहतर ट्रीट कर सकते हैं, करते हैं। सो जो मुशर्रफ ने, उस्मान ने यहाँ पॉइंट अक्रॉस की कि टाइप 1 की ट्रीटमेंट सिवाय इंसुलिन के कुछ नहीं है, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। जब हम ऐसे पेशेंट को स्टार्ट में टैबलेट दे देते हैं, हम क्या करते हैं? What do you think? What is the wrong thing that we do? शुगर तो फिर भी कंट्रोल हो जाती है। Why do you think कि क्यों टैबलेट देना टाइप 1 बच्चे को खतरनाक है? Excellent. सर, होता क्या है कि आप जब टाइप 1 पेशेंट भी डायग्नोज होता है, उसका 10% रिजर्व होता है, 10 से 50% रिजर्व होता है। आप उसको वक्त से पहले एग्जॉस्ट करा देते हैं, आप उसका एंड ऑर्गन डैमेज वक्त से पहले करा देते हैं। These are young children who have 40-50 years to live. ठीक है? I see children coming to me with one eye, blind eye. एक टांग है, एक पाँव है, वो सुन्न है, एक अंगूठा कटा हुआ है। ठीक है? अब आप कितना उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा लेंगे? मैं क्या कर लूंगी? सो माशाल्लाह आप सब लोग तो बहुत समझदार हैं, लेकिन जो न्यू अपकमिंग जनरल फिजिशियंस हैं, आई थिंक दिस इज टाइम वेयर आप लोगों को टीच कर सकते हैं कि इसका सिवाय इंसुलिन के और कोई इलाज नहीं है। नंबर 2, सॉरी सर मैं आपका टाइम ले रही हूँ। यहाँ अभी एक और सवाल आया था कि कैन इंसुलिन बीडी मिक्स्ड आर्ड या 70-30 of any form can be used in type 1? Yes, it can be. It is being used by different people. मगर सर ऑप्टिमम कंट्रोल नहीं आता, या उसमें हाइपो में जा रहा होता है पेशेंट या हाइपर में जा रहा होता है। हाँ, मरता नहीं है, मरना तब ये जब हमारी आई है, लेकिन सर कॉम्प्लिकेशंस आर देयर।
वी आर हियर फॉर ऑप्टिमम कंट्रोल। याद रखिए, हमने बेहतर से बेहतर के लिए स्ट्राइव करना है, ठीक है। सो जिसको आप काउंसल, दिस इज वेयर यू पीपल कम कि सर हमारी काउंसलिंग पे है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहुत है इज्जत, जनरल फिजिशियंस की स्पेशलिस्ट से ज्यादा इज्जत है। अभी भी आपकी लोग सुनते हैं, आप कहेंगे आपको कोई ना नहीं कहेगा। अगर आप उनको कहेंगे नहीं जी 3 वक्त से कम नहीं लग सकती, तो वो आपकी सुनेंगे। When you give them the option of once या twice, तो कोई क्यों फिर 3 टाइम लगाएगा, ठीक है। So please, I think it is of utmost importance. डायग्नोसिस सर, एंटीबॉडीज पाकिस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत मुश्किल है करवानी, अफोर्ड करनी। उनकी रिलायबिलिटी यस, स्पेसिफिसिटी 99% है, आई एग्री। मगर आई थिंक एज अ क्लिनिशियन, मेरे टीचर्स जो गुजरे हैं, जो मैं करती हूँ कि क्लिनिकल डायग्नोसिस है। आपको एक बंदा दिखा है, वो इस एज ग्रुप का है, इस BMI का है, ठीक है, यू नो दिस इज टाइप 1। अगर आपको ज्यादा शक है, आप 10 दिन बाद बुला के देख लें, यू विल नो दिस इज टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। सो प्लीज काइंडली, इफ यू कैन हैव द एंटीबॉडीज डन, गो अहेड, बट डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। जी सर, जी सर। टाइप 1 and टाइप 2 उसमें सर आपका मतलब कीटोसिस से है? कीटोसिस नहीं है, टाइप जो है डीके नेगेटिव है, टाइप 1 है, और टाइप 2 दूसरा केस टाइप 2 का। इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एंटीबॉडीज हमें हेल्प करेंगी ना इसमें? ऑफ कोर्स तो उसमें फिर करवानी चाहिए ना? ऑफ कोर्स, अगर आपको अवेलेबल है, आपके पास टाइम है, आप 100 दफा कराएं, मैं मना नहीं कर रही, मगर इस इंतजार में ये ना करें कि आप इंसुलिन ना शुरू करें। नहीं वो तो शुरू कर दें, लेकिन इसको क्लियर भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, अगर आपको अवेलेबल है तो क्यों। मेरा एक सवाल है जी डॉक्टर जहीर साहब आपसे कि नॉर्मली जिस तरह हमने देखा मैनेजमेंट में, एक तो बेसल इंसुलिन है और एक बोलस इंसुलिन है, जिसको हम अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, हिज एक्टिविटी लेवल, व्हाट ही इज टेकिंग, उस पर हम 3 टाइम में करते हैं। अगर एक पुअर पेशेंट है और वो बेसल इंसुलिन क्योंकि एक्सपेंसिव भी होती है उस तरीके से नहीं कर सकता, तो क्या हम उसको सिर्फ 3 टाइम उसकी नीड्स के मुताबिक प्लेन इंसुलिन के साथ नहीं करेंगे? देन मेक द योर एनपीएच एज अ बेसल। उसको नाइट टाइम पे आप ऐड करके, एनपीएच का आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 8 से 14 घंटे होता है, तो आप उसको ऑन एवरेज 12 घंटे रख के उसको एनपीएच एक टाइम पे जरूर ऐड करें, और आइडियली 2 टाइम पे ऐड करें। तो जब 2 टाइम पे ऐड कर देंगे तो उनका बेसल कवर 24 आवर का बन जाएगा, और बाकी जो है 7 एनपीएच 2 दफा या 3 दफा आपने रेगुलर जो देनी है वो देनी है। नो इंसुलिन रेजिमेन इज कंप्लीट, नो इंसुलिन रेजिमेन इज कंप्लीट विदाउट आइदर इंटरमीडिएट इंसुलिन और द बेसल इंसुलिन, अगर आपने रेगुलर देनी है। ये जो होती है ना एसएस बेस पे इंसुलिन, ये कभी कभी होता है कि सर्जरी करवा ली है, पेशेंट की ओरल बंद है, तो आप फिर वो जो एक फार्मूला होता है डिवाइडेड बाय 20/5 करके आप उनकी निकाल लेते हैं 1-2 दिन के लिए, जब तक उसका एनपीओ नहीं होता। वरना अगर आपने इंसुलिन पेशेंट को हफ्ते के लिए भी देनी है बेशक, तो उसमें आपने जरूर आपने इंटरमीडिएट यार है वो ऐड करनी है। बिल्कुल ट्रायल नहीं, ये बहुत करीब पहुंच चुकी है। आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन और एज सच पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ये तकरीबन सक्सेस के करीब हैं, तो ये आने वाले वक्तों में हो सकता है ये हो जाए। और ये किडनी के साथ जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं ना जी, तो बाहर तो ये साथ ट्रांसप्लांट पैंक्रियाज भी कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से काफी देर तक रिलीफ रहती है उसको। और इसमें जीन थेरेपी भी टाइप 1 के अंदर जो है ना, ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर जीन थेरेपी, उसका भी बड़ा रोल एक आ रहा है कि जो आने वाले वक्तों में हो सकता है ये हो जाए। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असल में आपको बात बताऊं, फैमिली फिजिशियंस का, जो कि मैं भी फैमिली फिजिशियन है स्टार साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, हमें जो ज्यादा मिलते हैं ना वो टाइप 1 से ज्यादा और टाइप 2 के दरमियान में 1.5 डायबिटीज भी होनी है, 1.5 डायबिटीज जो है ना लाडा, ठीक है ना, लेटेड ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट्स की जो होती है वो होती है। उसमें कुछ खूबियां जो है ना वो टाइप 1 वाली होती है, आप उनकी एंटीबॉडीज कराएं वो भी मिलेंगी, सी पेप्टाइड कराएं वो भी आ जाएंगे। तो ये वाली जो क्लास है ना, ये अमूमन आप अपनी प्रैक्टिस में देखेंगे, एक लड़का है जो मतलब 22, 23, 24 साल का है, 25 साल का है, 26 साल का, इवन 30 ईयर का है, पतला सा है, दुबला सा है,
और वो शुगर के साथ लाल गल्ला, डायबिटीज में थोड़ी चीज भी बात कर शुरू में ना रेड हो जाती है, आपने शायद ऑब्जर्व किया हो। तो आप उसको दवाइयां दे रहे हैं, वो मोटा भी नहीं है, आप समझ रहे हैं यार ये पता नहीं टाइप 1 है टाइप 2 है, आप उसको दवाई शुरू करते हैं ओरल, वो थोड़ी सी ठीक होती है क्योंकि आजकल ये सीटा वीटा और विल्डा शिल्डा चल रही है, SGLT2 वाले बड़ा जो जितना करवाते थे डायम्पा वाले होते दवाई पा दी थी, वो मरीज ठीक नहीं होता। ठीक है, अब अक्सर में हो सकता है कि वो लाडा का केस हो, तो वो यूजुअली टू स्टार्ट विद वो मेटफॉर्मिन से ठीक होते हैं। अगर तो वो अपनी एक्सरसाइज अच्छी रखे, रेगुलर अच्छा रखे, सारा कुछ ठीक रखे, तो वो उनको मेटफॉर्मिन कुछ अर्सा चल जाती है, वरना फिर जल्दी उनको इंसुलिन के ऊपर आना पड़ता है। अब इनकी डायग्नोसिस कैसे होती है, यही एज बनती है तकरीबन को 20, 22, 25 साल की, यंग पेशेंट है, आपको डाउट पड़ा, दवाइयों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक नहीं हो रही, शुगर 300-400 पे थी, अब 250 पे आकर रुक गई है दवाइयों के बावजूद भी, तो उनके सोचे को शायद लाडा है। इसी तरह मोडी की 6 टाइप्स हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग, उनमें टाइप 2 और टाइप 3 है, उसमें वहां तक जिसमें इंसल्फोनिल रिएक्ट करती है। इंसुलिन तो खैर करेगी, लेकिन अगर ओरल में देनी है ना तो उनमें सल्फोनिल यूरिया आप शुरू में दे सकते हैं, ठीक है ना, वो टाइप 1 से हटके डायबिटीज है। तो वो भी अमूमन यंग पेशेंट होते हैं, कोई 12, 13, 14, 15 साल या 20 साल तक के, और वो जेनेटिक स्टडी में पता चलते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज पर नहीं पता चलते। एक 6 माह का बच्चा या 4 माह का बच्चा, उसको पता चल रही शुगर हो गई है, आपने उसकी एंटीबॉडीज भी नील लें, सी पेप्टाइड भी नील लें। अब ये समझ नहीं आ रही यार, ये पता नहीं टाइप 1 में तो एंटीबॉडीज चारों करवा ली जो डॉक्टर साहब ने बताई, वो भी सारी नील लें। ये एक 7वीं टाइप है डायबिटीज ऑफ न्यूनेट्स, कि जिसमें पेंक्रियाज बने ही नहीं थे, और बीटा सेल, आपको पता है टोटल वजन कितना होता है पेंक्रियाज का बॉडी में, कोई गैस है? औरतों में वजन ज्यादा होता है इसका साथ साथ, ऑन एंड एवरेज का जो वेट है ना वो 125 से 140 के करीब है, 90 से 150 ग्राम, 120 एवरेज लगा लें, और फीमेल में 100 से 200 के दरमियान है। फीमेल का पैंक्रियाज वजन ही होता है, ठीक है ना जी। चलो जो भी इसका, उसके अंदर उसका सिर्फ जो 5 to 10% है ना बीटा सेल्स हैं, अगर उसका वजन करें तो शायद एक चने के दाने के बराबर ना हो। और बीटा सेल जनरली स्टेटमेंट ये है, जनरल स्टेटमेंट के रीजनरेट नहीं होते। कुछ दवाइयां हैं जो कह रही हैं वो कर देती हैं, बचा लेती हैं, प्रोग्रेशन रोकती हैं, रीजनरेशन, लेकिन जनरल एक स्टेटमेंट अभी तक किया है कि कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो इसको बिल्कुल डेड हो गए तो नए बना दें, ठीक है ना जी। अब जो अल्लाह ने एक दफा हमारे बना दिए या जो हमारे आ गए, हमने सारी जिंदगी उसी से काम लेना है, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि अपने बीटा सेल्स को बचा के रखें, बच्चों के बीटा सेल्स को बचा के रखें, क्योंकि जो बन गए ना उन्होंने सारी जिंदगी उससे काम लेना है। और बीटा सेल्स के सबसे बड़ी दुश्मन मैकडॉनल्ड और KFC है, और आपकी पेप्सी और बर्गरोलॉजी है। हमारी प्रेजेंटेशन में अक्सर जो मेरी पहली स्लाइड ये होती है, डायबिटीज की जो मर्जी डेफिनेशन किताबों ने लिखी हो, बट दिस इज द डिजीज ऑफ मैकडॉनलॉजी एंड बर्गरोलॉजी एग्रीवेटेड बाय द पेप्सिकोलॉजी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सर साहब याद है आपको, हर दफा हम यहां से बात करते हैं कि आप मुनासिब खाएं, बैलेंस खाएं, और वो जो जमीन के पेट से जो चीज निकलती है, जमीन के पेट से निकल के आपके पेट तक जाने में कम से कम प्रोसेसिंग हुई चीजों की, उनमें जितनी, और अगर प्रोसेसिंग उन चीजों की हुई भी हो तो सिर्फ आपकी माँ की, बहन की, बेटी के हाथ की हो। जब उसमें मशीनें पड़ती है ना ज्यादा से ज्यादा, तो तब काम खराब होता है। इसी तरह दूसरी एक बड़ी स्टेटमेंट है कि प्लांट से बनी चीजें ज्यादा से ज्यादा लेनी है, प्लांट में बनी चीजें कम से कम लें। क्यों जी सर साहब? प्लांट से बनी चीजें ज्यादा से ज्यादा, और प्लांट में बनी के प्रोसेस्ड फूड बहुत कम से कम लें। और अगर डायबिटीज हो गई है तो मैं तो सच्ची बात है मैडम ये कहता हूं कि डायबिटीज वाले को ये नहीं कहना मरीज है। जिस तरह एक दफा मैडम पता नहीं किसने, शायनाज ने किसने कहा कि नेक्स्ट पेशेंट, तो डांट दिया उसने अटेंडेंट को कि प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, इट्स नॉट अ पेशेंट, दिस इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट। तो हमारी भी डायबिटीज पेशेंट नहीं है सर, प्लीज। आई एम विद स्पेक्टिकल्स एंड आई एम विद बियर्ड। देयर आर टू टाइप ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, one with beard, others are without beard, one with spectacles, other without spectacles. So there are two types of people, we are with the hyperglycemia, others are with the normal glycemia. अब आपने सिखाना है, पढ़ाना है, ट्यूशन बतानी है उनको कि आपने अपना शुगर लेवल इसके अंदर रखना है, और उसमें जो सबसे बड़ी आपकी दोस्त है दवाइयों से भी ज्यादा, वो आपकी एक्सरसाइज है। आपको पता ना कि हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन को इंसुलिन नहीं चाहिए होती, आपके मसल्स को चाहिए, आपके लिवर को चाहिए, आपके पैंक्रियाज अपने फैट को चाहिए, लेकिन आपके ब्रेन सेल्स को, आपके कार्डिक सेल्स को, आपके आरबीसीज को, आपके एपिथेलियल सेल्स को
किडनी का नहीं चाहिए, अल्लाह ने बगैर इंसुलिन को। मसल्स एक ऐसे हैं कि जो दोनों सूरतों में काम कर सकते हैं कि आप अगर इनको रेगुलर एक्सरसाइज पे लगाएंगे तो इंसुलिन, दे स्टार्ट यूजिंग इंसुलिन विदाउट यूजिंग ग्लूकोज विदाउट इंसुलिन। तो इनको इस्तेमाल में रखें ताकि इंसुलिन जो है ना आपकी बाहर से दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम रहे, और फिर वो उसको फूड ऐसी ना दें जो आपकी शुगर को लेवल अब्रप्टली बढ़ाते हैं। हाई फाइबर डाइट, प्लांट ओरिजिन की चीजें, बहुत ज्यादा स्वीटनर्स हैं, वो हमें पता ही है सबको हमने क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा खौफ और बैरियर, मुझे तो आज तक मैडम ये समझ नहीं है, और उस्मान भी मेरी बात सुन रहे हैं कि मैं मतलब पल्मोनोलॉजी में गुलाबदेव में होता हूँ, तो पल्मोनोलॉजी में एक्सपोजर है, हमने वो तक बना ली कि आप लगाएं तो ऑक्सीजन का पता चल जाता है, ठीक है ना, फौरन दिन में 100 दफा चेक कर लें। लेकिन अभी इतना फ्रिक्वेंटली यूज, शायद कोई बाहर हो, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि अब यहाँ लगाओ शुगर का पता चल जाए फौरन। सेंसर्स की बात कर रहे हैं, और वो अगर है तो इतना सस्ता हो कि हर मरीज के हाथ में हो। कॉस्ट इज अ इशू, अदरवाइज अवेलेबल तो है नहीं। पहले मेरी बात सुन लें, मैं अब ये कह रहा हूं कि ये 1000 रुपए का 2000 रुपए का आता है। अगर कोई ऐसी चीज अवेलेबल हो कि एक बंदे को इस तरह लगाएं और वो कर ले, और वो आधे घंटे की वॉक करके आए या 15 मिनट की एक्सरसाइज करके और फिर दोबारा फौरन चेक कर ले कि यार मेरा इतनी वॉक से कितना फर्क पड़ा है जी, विदाउट प्रिकिंग। या एक है कि मैंने एक आम खाया, पहले कितनी थी, दोबारा चेक किया, दोबारा। आपका सबसे बड़ा बैरियर शुगर चेकिंग है, शुगर चेकिंग है, ठीक है कि नहीं? तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम, अगर आप मिनट बाद चेक करके, एक्सरसाइज करके चेक कर ली, खाना खा के चेक कर लिया, यार ज्यादा कि मैं वॉक कर लूं, तो आपकी चीजें बड़ी सेटल रहेंगी। तो ये अगर जो चीज नहीं ना आ रही कोई नॉन इन्वेसिव सस्ती करके, इसके पीछे भी कोई साइंस है, मेरा ख्याल है। आगे एक बंदा उसका फास्टिंग बड़ा कंट्रोल है जी, असल जो वेरिएबिलिटी है पूरे 24 आवर में, वो अगर वो कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही है तो उसी से पता चलता है, ठीक है। वो बाकी अगर सस्ता हो जाए और है अवेलेबल, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, एक वक्त आएगा कि वो अवेलेबल। अच्छा, एक आपके क्वेश्चन से ये बड़ा कंट्रोवर्शियल एक है मसला बीटा सेल्स का। बैरिएट्रिक सर्जरी में हमने देखा कि लोग इंसुलिन भी छूट गई, उनकी मेडिसिन भी छूट गई। सेम इज द केस के लोगों जिन्होंने कार्ब कंट्रोल किए और उनका वेट कंट्रोल हुआ, तो उनकी भी काफ़ी मेडिसिन। और हमारे एक इधर ही हैं, एक हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, वो बता रहे थे कि मैंने अपने डाइट को कंट्रोल किया है और मेरी 3 मेडिसिन थी ओरल, मैं तीनों को छोड़ दिया, ठीक है ना। तो मतलब इसकी फिर क्या एक्सप्लेनेशन है अगर टोटली बीटा सेल्स? मैडम इस पर आप कमेंट करेंगे? इसकी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। सर देखिए, पॉइंट इज दिस कि इफ यू फॉलो ऑल द 3 domains ऑफ अ ट्रीटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम डाइट, लाइफस्टाइल एंड मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स थिंग्स गेट बेटर, ठीक है। आप ड्रग्स से डाइट पे आ सकते हैं, ठीक है। बेरियाटिक के अंदर अगर उन्होंने मेटाबॉलिक सर्जरी आपकी की हुई है तो उसके अंदर ऑफ कोर्स यू कैन रिवर्ट बैक, सिंपल रूल है। सर मैंने क्या जैसे किया ना, पहले 3 बड़े ऑर्गन हैं जिनको इंसुलिन चाहिए। आपके मसल्स हैं, लिवर है, लिवर एज सच, और आपकी फैट है। इनमें से लिवर को तो हम काट नहीं कर सकते, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जरूरत हुई है। बाकी रह गए मसल्स, और वो मसल को भी काट नहीं सकते। मसल्स को अगर आप इस्तेमाल प्रॉपर करेंगे तो मसल कहते हैं कि चलो जी मैं अपने ग्लूकोज खुद ही यूज कर लेता हूँ विदाउट इंसुलिन, तो उसका हल क्या? एक्सरसाइज 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 एक्सरसाइज, 100 दफा एक्सरसाइज। बाकी पीछे बची फैट। फैट वो चीज है ज्यादा फायदा ही कोई नहीं, ये सिर्फ नुकसान है। ये व्हाइट एलिफेंट है, ये सिर्फ इंसुलिन खाता है। अब उसको निकालना है आपने। अगर आप इसको निकाल दिया, और हमें पता ये जो इलाज हम बात कर रहे हैं ना मेरे साहब, ये टाइप 2 के अंदर है कि जिसमें 0 इंसुलिन कभी भी नहीं होती, 0 बीटा सेल्स कभी भी नहीं होते। जब आपने बल्क ऑफ उसको निकाल दिया, या बैरिएट्रिक सर्जरी से जब आपने वो छोटा कर दिया और वो खुरना शुरू हो गई और आपकी कुछ अरसे बाद फैट कम हो गई, तो आपका बहुत बड़े जो रिसेप्टर्स हैं, मैं तो ये कहता हूं, मुझे एग्जैक्ट मेरे स्टडी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हमें 100 इंसुलिन के चाहिए ना मॉलिक्यूल पूरे दिन में, उन्हें जो 70 फैट खा जाती है बगैर वजह तो, ठीक है। तो अब फैट को अपनी को कम करें, जब वो कम होगी तो जो आपकी अवेलेबल इंसुलिन होती है ना, आपको काफी हद तक आपके लिए काफी हो जाती है जी। ऑब्वियसली अब हमारी ओबेसिटी 2 तरह की है, एक है आपकी पीयर शेप ओबेसिटी और एक है एप्पल शेप ओबेसिटी, ठीक है। जो एप्पल शेप ओबेसिटी जिसका दरमियान में से पेट निकला, वो इंतहाई खतरनाक है। जो पीयर शेप होती है, जिनके बटक्स ज्यादा, जो कि फीमेल के अंदर होती है, वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती।
तो विसरल ओबेसिटी जो या सेंट्रल ओबेसिटी है ना, उसको कंट्रोल करना है, और ओवरऑल ओबेसिटी को वैसे दोनों को कंट्रोल करना है। वो जैसे जैसे हमारा हमारा जो बनता है ट्राइग्लिसराइड वगैरह वो इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से डेपोजिशन ऑफ अमाइलाइड इन बीटा सेल्स देयर। ये एक स्टडी जो है, ये एक बुक में मैंने इन डिटेल पढ़ा था कि वो कहता है कि ये अमाइलाइड जब डेपोजिशन होती है तो वो बीटा सेल्स जो है वो काम अपना छोड़ जाते हैं। जैसे ही आप यानी कि ये कह लें कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, जैसे ही आप उसकी इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो फूड से करें, चाहे वो आप उसकी एक्सरसाइज से इंसुलिन करें, शुगर को कंट्रोल करते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं। नहीं, शुगर को कंट्रोल ना भी करें, आप उसके इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करें, जो आपकी बायोकेमिस्ट्री अंदर चल रही है, आप इसको कंट्रोल करेंगे तो वो वहां पर रीजनरेट हो जाएगा। वो जो अंदर उसके माइलाइड डेपोजिशन हुई है वो उसको जो है वो वापस आ जाएगा और वो जो है वो अपना काम दोबारा शुरू कर देगा। एक तो ये एक बात करनी थी। दूसरी बात ये है कि हम चूंकि जैसे आपने कहा कि जी मैकडोनल्ड, पेप्सी और ये सारा कुछ करता है, तो इसीलिए हमारी जितनी भी न्यू जनरेशन आ रही है वो सारी ज्यादा ओवरवेट होने की वजह से उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। तो इसलिए वो 14-15 साल में आमतौर पे हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं कि जो वो डायबिटीज 2 होती है, ठीक, लेकिन वो इंसुलिन पे हो रहे होते हैं। यानी ये भी एक कंट्रोवर्शियल सिलसिला चल रहा है, तो इसमें जरा प्लीज आप गाइड है। इसमें ये बिल्कुल आप बात ठीक करें। एक है कॉन्सेप्ट लिपोटॉक्सिसिटी और ग्लूकोटॉक्सिसिटी का, लिपोटॉक्सिसिटी एंड ग्लूकोटॉक्सिसिटी, कि जब आपका बहुत ज्यादा हाई शुगर लेवल होता है वो, या आपके जब लिपिड बहुत ज्यादा बर्न हो रहे हैं वो, दोनों सूरतों में वो दो जगह पे जाके खराबी करते हैं। एक तो इंसुलिन रिसेप्टर को ऐसा वो कर देते हैं जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, दूसरा बीटा सेल्स जो फंक्शनल भले चंगे होते हैं वो 50% डैमेज हो चुके हैं। वो तो बात अपनी जगह पे ठीक है, जो हम 2008 से मेजोनेट से पढ़ रहे हैं कि जब आपको शुगर का पता चलता तो आपके 50% बीटा सेल उड़ चुके होते हैं, बाकी जो फिर 8% पर ईयर होते हैं, ये बात भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अब जो ठीक है ना, अगर आपके ये जो माइलिन डिपॉजिट की आप बात कर रहे हैं वो जाके उनको वक्ती तौर पे फंक्शनल को ब्लॉक कर देते हैं। अब अगर हम उनकी लिपोटॉक्सिसिटी को रोक ले, जिसके अंदर बैरिएट्रिक सर्जरी भी आती है, जिसके अंदर आपकी एक्सरसाइज भी आती है, जिसके अंदर आपकी जंक फूड्स का ना खाना भी आता है और फैटी फ्राइड चीजों का ना खाना भी आता है, ये सारी चीजें जो हेल्प करती हैं कि एक तो वो वहां से जो आपके डिपॉजिट्स हुए उनको निकालने में, प्लस उसकी रीजनरेशन में, तो जिसकी वजह से जो है ना ये सारी चीजें हेल्पफुल होती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होती है और बीटा सेल की फंक्शनिंग भी बेहतर होती है। लेकिन बीटा सेल का रीजनरेट कर जाना, ये जो है ना अभी तक क्वेश्चनेबल या डिबेटेबल बात है कि बीटा सेल बिल्कुल ही डेड हो गए हैं। तो आप उनको जैसे फर्ज करो ऑटोइम्यून डिजीज में टाइप 1 में होता है कि इसमें एंटीबॉडीज ने डैमेज कर दिया है, ठीक है कि नहीं। तो अब टाइप 2 में जीरो कभी नहीं होते, बिल्कुल डेड कभी नहीं होते, थोड़े बहुत जो बचे होते हैं आपने उनको कैसे इस्तेमाल करना है, वो उसके लिए सारी स्ट्रेटजी है ये। सर इसका मैं आई वुड लाइक टू आंसर कि इसीलिए एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस इट इज इम्पोर्टेंट कि आप पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ले। एज इज नॉट द ओनली लिमिटिंग फैक्टर कि अगर एक बच्चा है तो वो सिर्फ टाइप 1 ही होगा, टाइप 2 भी हो सकता है। इफ इज obese, उसकी अकेंथोसिस है, उसका पेट ज्यादा है, बाजू ये वो सब डार्क है, तो ही इज टाइप 2। यू स्टार्ट हिम ऑन मेटफॉर्मिन, यू फॉलो हिम अप। अगर आगे जाके उसको फेलियर हो जाता है, टाइप 1 हो जाए, वो एक और बात है, लेकिन यू डोंट स्टार्ट देम विद इंसुलिन। देखिए टाइप बच्चों के अंदर टाइप 2 मिल रही है और बड़ों के अंदर टाइप 1 भी मिल रही है, तो लिहाजा ये कभी नहीं कहना। अक्सर ऐसे ही होता है कि जो छोटे बच्चे होंगे वो टाइप 1 नहीं होगी अक्सर। अब इसको स्टेटमेंट को बिल्कुल नहीं कहेंगे, वो भी हो सकते हैं, लेकिन जहन में ये जरूर रखना हमेशा कभी नहीं होता। मेडिसिन में हमेशा वाली बात कोई नहीं है, ठीक है ना जी। तो टाइप 1 बच्चे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। टाइप 2 बच्चों में भी कॉमन बड़ी देखने में आ रही, खास तौर पे जब से जो जिससे मैंने बात शुरू की थी कि जब से ये वाली फूड्स आई हैं और बच्चों का वजन बढ़ना और मेटाबॉलिक बड़ा बड़ा चैप्टर है जिसमें हम बात करते रहते हैं, तो टाइप 2 बच्चों के अंदर मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा ऐसे। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो टाइप 1 बच्चे हैं, दे आर एक्सट्रीमली साइकोलॉजिकली अपसेट बिकॉज दे आर ऑन इंसुलिन, दे आर यंग एज, उनको अपना फ्यूचर बहुत ब्लैक दिखता है, उनको दे थिंक इट्स एंड ऑफ देयर लाइफ। तो उनकी साइकोलॉजिकल केयर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मोस्ट बच्चों की शुगर इसी बात पे कंट्रोल नहीं हो रही थी बिकॉज दे आर अपसेट। स्ट्रेस जो है शुगर बढ़ाता भी है, कम भी करता है। टाइप 1 को ट्रीट करना आसान नहीं है,
इस वक्त we are treating more than 700 type 1 diabetic patients at our center, and it is extremely difficult. We have kept a separate psychologist to train each and every child that comes there. So it is extremely important कि उसका जो psychological element है, खासतौर जो females हैं, इंसुलिन लेती है, तो और उनकी डाइट जो है सर, उनकी और टाइप 2 की डाइट भी डिफरेंट है. इट इज नॉट द सेम डाइट एज टाइप 2. तो ये एक पूरी एक नई डिफरेंट डोमेन है जो कि पाकिस्तान में अब बहुत कॉमन है. हर दूसरा पेशेंट आपका इंसुलिन रिक्वायरिंग है. इंसुलिन रिक्वायरिंग टाइप 1 भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन वाला भी हो सकता है पेशेंट. आप अगर जरा थोड़ा सा, आई नो यू आर वेरी बिजी कंसल्टेंट्स, लेकिन अगर आप एक दिन दें अपने पेशेंट्स को तो आप देखेंगे टाइप 1 इतनी कम नहीं है. इट इज प्रीटी कॉमन. और मैं ऑनेस्टली आपको मशवरा भी और ये राय भी दूंगा कि जिस तरह एकदम इस्केमिक हार्ट डिजीज का मरीज है तो हम खुद नहीं देखते ना, भेज देते हैं उसको, मतलब टू टाइम हुआ है, कुछ हुआ, रीनल एंड स्टेज डिजीज है यार, डायलिसिस करवा लो. तो टाइप 1 वालों को भी ना, हमेशा के लिए ना सही तो कम से कम 3 से 6 माह में के लिए ना एक दफा जहां पे प्रॉपर एंडोक्राइन ट्रीट हो रही है, और खास तौर पे टाइप 1 जैसे मैडम कह रही हैं चिल्ड्रन, अब इत्तेफाक में तो शाम को सुबह तो सर्विसेज में. अच्छा, सर्विसेज में तो वहां पे ये जहां पे भी टाइप 1 की प्रॉपर एंडोक्राइनोलॉजी केयर हो रही है ना, बच्चों को वहां पे जरूर भिजवाएं, इफ नॉट ऑल द टाइम, लेकिन कम से कम 3 में, क्योंकि जो उनकी साइकोलॉजिकल हेल्प होती है ना सर, मैं आपको सच बताऊं, मुझे याद है कि कसूर के भी 3-4 ऐसी बच्चियां हैं, जब शुरू में ऐसे हुआ ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर थी, आज से 18-20 साल पहले की जब मैंने प्रैक्टिस नहीं शुरू की, लेकिन उनको इंसुलिन बता दिया कि बेटा एक दफा हो गई है, माँ को बता दिया यार आप परेशान हो, जो मर्जी हो, जितना कोना 2 हफ्ते लिए हो लो, लेकिन अब इसके साथ रहना है हमने, ठीक है कि नहीं. और उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूसली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाते रहे, शुरू में 1-2 साल बाद, और वो बच्ची समझ गई. उसके बाद ऐसे एक्सपर्ट थी सर, खुद ही देखती थी, खुद ही लगा लेती थी इंसुलिन. अब माशाल्लाह उसकी शादी हो गई, अब 2 बच्चे हैं उसके. तो उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है. सर आप कोशिश करें तो आप उनके ग्रुप्स बना लें, अपनी क्लिनिक में बना लें. यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व अ स्पेशलिस्ट. अ ग्रुप ऑफ 10 पेशेंट्स ईच, दे कैन डिस्कस, टॉक. फिलहाल उनको यही होता है, हमारे यहाँ लोग अपनी बीमारी की बात नहीं करते, चाहे वो जुकाम ही क्यों ना हो, ठीक है. दे थिंक कि उनको डायबिटीज और किसी को हुई नहीं है, ठीक है. सो व्हेन दे सी कि नहीं अगले घर में भी एक बच्ची एक बच्चा है, ये है, तो इट्स नॉट दैट बैड. सो दे गेट कॉन्फिडेंट, दे गेट हैप्पी एट लीस्ट. तो ये आप अपनी क्लिनिक में बैठे भी कर सकते हैं. मैं बार बार आपको कहूंगी, यू विल नॉट लूज योर पेशेंट, बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके ऊपर. और ये है कि बहुत जबरदस्त बात है, गोरों ने यही काम किए हुए हैं, जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजीज है ना, कोहॉर्ट है एक बीमारी का, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस ग्रुप है जिसके अंदर ILD ग्रुप है, मतलब IPF ग्रुप है. इस तरह टाइप 1 डायबिटीज का ग्रुप बनाओ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡਮਿਨ ਬਣो, 12-14 बच्चे पाओ, वो अपने एक्सपीरियंस उसमें शेयर करते हैं और एक दूसरे को एक्टिविटीज बताते हैं, जिससे बहुत हेल्प हो जाती है एक दूसरे को. यस, वेरी गुड. सारा ही हमने चेंज करके रख दिया कि रात को जागना और दिन को सोना. जी सर. तो इसका क्या इफेक्ट हुआ? सर यही मसला है. अब आप ये देखिए, मैं आप बच्चा कोई भी होगा, हमारे हार्मोन्स की पीक आती है इन द मॉर्निंग एंड डिप आती है एट नाइट. इफ यू स्लीप थ्रू आउट द डे एंड यू वेक अप 2-3-4 बजे और खाना ही आप शुरू 5 बजे करें, रात सारी जागे, तो आप देख लें आपका मेटाबॉलिज्म कहाँ गया. डायबिटीज हो गई, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो आजकल इतना कॉमन है, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी. दे हैव सीन पैरामेडिकल स्टाफ सर जो कि नाइट ड्यूटी ज्यादा करता है, उनके अंदर डायबिटीज का इंसिडेंस ज्यादा हो गया. बच्चे तो आपने देखे ही हैं सारे. सो प्लीज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, जब अ मदर इज प्रेग्नेंट शी डिसाइड्स कि उसका बच्चा डायबिटिक होगा कि नहीं होगा. इनसाइड द मदर बच्चा डायबिटिक हो जाता है, सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कब वो जाहिर होता है. सो प्लीज, हेल्दी मदर्स गिव राइज टू हेल्दी चिल्ड्रन. असल में मेरे ख्याल है प्रिवेंशन के ऊपर हमें बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, जो कि हम नहीं देते जी. ये चीजें. डॉक्टर साहब आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे? माइटोकॉन्ड्रियल कौन सी? मोनोजेनिक. आप बताइए मैडम. Sir, ये mitochondria में, mitochondria as you know is more prevalent in females, so it is those, जब patient आता है they are often young,
They have fasting blood sugar levels more ज़्यादा होती है इनकी besides the ones जो सर कह रहे हैं 3, 4, 5 जो होती है जिसके में फिर सल्फोनाइलयूरिया आपको देना पड़ जाता है. These ladies often आपको डायग्नोस होती है गायनी ओपीडी में क्योंकि ये शुगर कराती ही तब चेक है, उससे पहले कराती नहीं है. ठीक है. और जैसे सर ने कहा कि इनके अंदर हाँ सल्फोनाइलयूरिया भी यूज हो सकता है. हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उस्मान मुशर्रफ साहब, प्रोफेसर जहीर साहब, डॉक्टर आमना मौजम. ये मेरा ख्याल है कि टॉपिक एक ऐसा था आज का कि जो कि फैमिली फिजिशियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था. और यूजुअली केस हमारा बेसिकली मकसद क्या है कि एक तो ये है कि जो नई न्यू मोडालिटीज़ हैं उसको समझना, और दूसरा ये है कि जैसे जहीर साहब ने कहा कि आप एक दफ़ा रेफर करके ये जो है ना रेफरल, 2 वे रेफरल, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है. उससे आपकी इनडायरेक्ट लर्निंग भी होती है और ताकि कोई गलती है. बेसिकली हमारा एम क्या है कि पेशेंट को हमने सेव करना है जितना मैक्सिमम. तो यही एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन का और ये इस तरह हमारा है. तो हम बहुत मशकूर हैं आपके कि आपने अपना वक्त निकाला और आप आए. मैं हमारे अपने जो दोस्त हैं जो इतनी दूर तशरीफ़ लाए उनका भी बहुत शुक्रिया. गेट्स कंपनी का इसलिए बहुत शुक्रिया कि देखें ये 6 महीने का सेशन है वीकली और ये अरेंज कर रहे हैं. तो मैं ये आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि देखें जो आपकी लर्निंग में हेल्प कर रहे हैं उनको अपनी प्रैक्टिस में भी ज़रूर उनका साथ दीजिए. अब बाहर ये सीढ़ियों के ऊपर एक ग्रुप फोटो होना है, तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएं. थैंक यू सो मच.